back like she wanna talk. Don't talk back like she wanna talk. Don't talk back like she wanna talk dirty. Don't talk back like she wanna talk. Don't talk back like she wanna talk. Back like she wanna talk. Don't talk back like she wanna talk. Welcome guys to Regina Uncuts, our season 2 episode number 1. যারা ভাবছে রিজানা আনকাস ফাইনালি মার্কেট থেকে চলে গেছে, আসলে তারা যায় নাই। উই আর ব্যাক, বাট আমাদের বাংলা এতটুকুই ছিল, বিকজ দিস এপিসোড ইজ গনা বি ইন হিন্দি। উই হ্যাভ আওয়ার গেস্ট Prashant. He is from Ahaan Immigration, and our this episode is sponsored by Ahaan Immigration. Welcome Prashant भाई. कैसा लग रहा है शो में आके? हाय फाहिम, बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे बुलाया. यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी पॉडकास्ट का. सो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी इन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन. Awesome. आप बहुत टाइम से रिजाना अनकर्स देख रहे हो. आप वन ऑफ द बंदे हो जिसने हमको गिव अस सम फीडबैक दैट रिजाना अनकर्स क्यों नहीं हो रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस में. वी वांट टू सी. जी. सो फाइनली रिजाना अनकर्स ये डिसाइड किया कि दे गोना रन द सीजन 2 इन 3 लैंग्वेज, टेक्निकली बांग्ला, हिंदी एंड इंग्लिश. सो आपका ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द कम्युनिटी एंगेजमेंट लाइक दैट? नहीं, मुझे लगता है कि टू केटर टू अ लार्जर ऑडियंस हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश में होना चाहिए. Because Bangla, with due respect to the community and the language, it's still confined to a certain amount of audience. जब आप हिंदी को टच बेस करते हो तो essentially हिंदी मुझे लगता है एक बहुत larger audience है, whether it's Pakistan, whether it's India, a lot of South Indian states also speak. So when you inculcate Hindi into your sessions, then you are catering to a larger audience, और larger audience से आपको views भी आएंगे और हमारा जो opinion है वो across the community जाएगा. So मुझे लगता है it's a great initiative. Awesome. So that was the whole idea, guys. It's like just to touch base a larger community. We'll directly come to Prashant bhai. Prashant bhai, आप क्या करते हो in professional life and what the all services you provide to the community? So just to talk about my background, मैं आया था May 2011 में. Okay. From 11 until 15 I was in Ontario, Hamilton. और 15 से मैं Saskatchewan, Regina में हूँ. Okay. And then I was, you know, as probably any first generation immigrant, I did hustle a lot. I was into a lot of jobs. मैं पहले शुरू में जॉब करता था as a store manager from 9 to 5. And then 7 to 11 I used to be the front desk. Okay. So मैंने 2 साल 2 jobs किए हैं and I've been a single parent. So I did a lot of juggling up as any first generation immigrant. और उसके बाद मैं कोविड आया. कोविड के बाद मैंने अपनी पढ़ाई इमिग्रेशन में की, डिप्लोमा किया इमिग्रेशन में. उसके बाद फिर उनका जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बैठा है. एंड देन आई वाज लकी इनफ विद माय डेडिकेशन आई वाज एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम. उसके बाद मैंने अपनी फर्म बनाई रजाना में ही, आहान इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम पे, जो मेरे माय सन उसके नाम पे मैंने इसको रखा. अच्छा. और पिछले 3-4 साल से मैं इमिग्रेशन फर्म ही चला रहा हूँ. आई एम अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हु इज लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस इन होल ऑफ कनाडा एक्सेप्ट फॉर क्यूबेक. और सस्कैचुअन का भी मेरे पास लाइसेंस है, तो मैं इमिग्रेशन सस्कैचुअन में भी कर सकता हूँ. आई एम अ लाइसेंस रिक्रूटर, आई एम अ नोटरी एंड कमिश्नर फॉर ओथ्स. So a host of services that I've been providing, and it's a smaller community, everyone knows everyone. So अच्छा लगता है when you have a service initiative, जब आपका सेवा भाव होता है, when you're just not looking at money, when you're trying to help people, then through referral, you're able to help families, individuals. And I essentially believe when people call me, they're not calling me to chit chat. वो इसीलिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं शायद कि वो परेशान है, उनका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है. सो बीइंग अ सिंगल मैन, आई एम यूजुअली अवेलेबल फ्रॉम 7 AM राइट अंटिल 12 midnight, all 7 days. So I think it's a community service and which leads to referral, and I would say making money is a byproduct. So that is the story so far in Regina, Saskatchewan, running this immigration firm. Awesome. तो ये आपका आहान इमिग्रेशन का कितना टाइम हो गया? ये मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं.
और पहले मैंने जॉब और बिजनेस दोनों साथ में किया. देन आई गेन सम कॉन्फिडेंस जब बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी में से हेल्प किया. फिर मुझे लगा आई थिंक देयर इज अ सर्टेन टाइम नाउ आई कैन जस्ट फुल फ्लेज्ड रन अ इमिग्रेशन फर्म. आई डोंट हैव टू बी इनटू अ जॉब एंड अ बिजनेस. तो 4 साल से मैं इमिग्रेशन फर्म रन कर रहा हूँ रोजाना सस्कैचुअन में. Okay, awesome. I just want to add about Prashant Bhai. Because of my so many purposes, studying from immigrations and so many things, if I call Prashant by like 11 p.m. or like 7 a.m. or 8 a.m. in morning, I always get response. So that's a huge thing for us because right now हम जो फील करते कि फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू गेट समवन जो इमिग्रेशन फार्म है इधर राइट इट्स रियली हार्ड टू फाइंड देम. You have to book appointments, you have to go through, hey, some other people are receiving the call, hey, you cannot call like that, you have to book an appointment, you have to come through it, pay visiting monies and consulting fee, right? So according to this flow आपका कैसे different है? मेरा ऐसे डिफरेंट है बिकॉज मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट होने से पहले क्लाइंट भी रह चुका हूँ 2011 में. Okay. सो व्हेन आई यूज्ड टू अप्रोच दोज इमिग्रेशन फर्म दे वर वेरी लेड बैक कि आज फोन कर रहे हो, देयर इज प्रोटोकॉल यू हैव टू फॉलो. पहले रिसेप्शनिस्ट उठाएगी, फिर वो आरसीआईसी के पास फोन जाएगा, वो 2 दिन बाद फिर आपको रिवर्ट बैक करेंगे. यहाँ प्रॉब्लम यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन. हो सकता है आपका वर्क परमिट एक्सटेंशन रिफ्यूज हो गया हो, स्टडी परमिट नहीं आया हो, रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. एंड बीइंग फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, आवर सर्विसेज इन इंडिया आर वेरी प्रॉम्प्ट. आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो विद इन मिनट्स आ जाती है. द कनेडियन वे, विथ अगेन ड्यू रिस्पेक्ट टू, इज फॉलोइंग अ सर्टेन प्रोटोकॉल विच आई डोंट डू. People when they approach, I try and give them a quick solution as a friend, as a mentor. I don't even, though I'm a professional, but when you're talking to me, you will probably feel you're talking to a family member. So that is the essential way I'm different from other immigration firms. एक तो 365 days, 7 days, even if I'm on holiday, you will still be able to approach me. That ways I'm different. And having a personal touch makes me very flexible and people can relate to me. इसीलिए मुझे लगता है इमिग्रेशन मैं जो रन कर रहा हूँ it's different from my competitors. That's really good. कनाडा का इमिग्रेशन फ्यूचर क्या है? मुझे लगता है कनाडा का इमिग्रेशन फ्यूचर बहुत ब्राइट है because let's not forget Canada is the second largest country in the world and you've just got 40 million people. To run any economy you have to have consumption. The engines to any economy is consumption. If you don't have enough people, who is going to be consuming your products and services? आपको लोग तो चाहिए ही. ये जो आज थोड़ा कम हुआ है, स्लो डाउन हुआ, आई थिंक इट्स वेरी इट्स जस्ट अबाउट अ मोमेंट, मोमेंट्री है और ये वापस आएगा वापस और आना ही होगा. इफ बिकॉज आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट दैट कैनेडा इज नॉट यूएसए. वी नीड people to run this economy and मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है. मे बी 1-1.5 साल बाद आप देखोगे बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी एंड यू विल हैव अ इन्फ्लक्स ऑफ पीपल. कैनेडा नीड्स पीपल. सो मुझे फ्यूचर टू कंक्लूड इज वेरी ब्राइट. सो अभी का जो हालत चल रहा है कनाडा में, हम अभी ऑलमोस्ट 968K applications are on backlogs, right? Only April 2025 तक 760K एप्लीकेशन बैकलॉग पे चल रहा है. परमानेंट रेसिडेंसी जितने एप्लीकेंट्स है 52% इज आउट ऑफ द स्टैंडर्ड इमिग्रेशन टाइमलाइन. ये जो क्राइसिस है, इज इट ऑब्वियस और जस्ट अ क्रिएटेड सिचुएशन? No, I will not say it's a created situation. It's because of a host of things that have led to this kind of a situation. Ek to there is an introduction of a AI. IRCC has been using AI software Chinook. So a lot of times the AI is processing the applications. And again, we are into the advanced stages of testing AI. इसलिए बहुत ज़्यादा processing time lag कर रहा है. Plus मुझे ये भी लगता है IRCCO, SNPO, they are short staffed. They have not recruited enough people to process the applications.
एंड आई सी अ लॉट ऑफ टैलेंट फ्रॉम साउथ एशिया. इसी को अगर हम रिक्रूट कर लें IRCC में, आपकी एप्लीकेशन बहुत फास्ट हो जाएंगी. तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम IRCC शुड realize the fact it needs people, and it has to have the right people being recruited in the system, so the files process fast. And probably we are still in the initial stages of testing the AI. जब ये एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो आप देखोगे प्रोसेस फास्ट हो गया है और ये सारी एप्लीकेशन जल्दी निकल जाएंगी. ओके तो अभी हमारा एप्लीकेशन बहुत पेंडिंग है, सो विल लाइक assume that it will run fast and the people are in depressions right now will get a solution soon as early as possible, because lots of people are having like work permit like a gone extended is not happening, right? Permanent residence is going on for timeline for 36 months, right, which is like crazy. I have applied for my wife, and then suddenly it was showing up like 4 months, 8 months, 36 months, right? So that is crazy. So I think so we should appoint more people rather than implementing. We should not have people's like fortune over AI, right? So this is one of my opinion. वो तो ठीक है प्रशांत भाई, लेकिन रिवर्स इमिग्रेशन क्यों हो रहा है कनाडा में? रिवर्स इमिग्रेशन के भी बहुत सारे रीजंस हैं. एक तो जो मुझे लगता है, अगेन दिस इज वेरी पर्सनल, दिस इज माय पर्सपेक्टिव. आई एसेंशियली बिलीव व्हेन यू कम टू कनाडा with a lot of dreams and aspirations, you know your dreams aspirations do not match the reality. जब आप वहाँ से सोच के आते हो ये कोई बॉलीवुड की एक फिल्म होने वाली है, बहुत रोमांटिक सा, सब कुछ होगा और अच्छा घर होगा. इनिशियल 5 years you have to work hard. अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि जी सिर्फ वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट वे. ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडिया हो, एवरीवेयर यू विल सी देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन एंड कनाडा इज नो डिफरेंट. सो व्हेन यू कम टू कनाडा, कम विद अ माइंड दैट फर्स्ट 5 years यू हैव टू वर्क हार्ड. जो पहले 5 साल मेहनत नहीं कर पाते या गिव अप कर जाते हैं, एंड डोंट फॉरगेट देयर इज नो डोमेस्टिक हेल्प, there's a lot of homesickness. आप 4 महीने घर के अंदर हो बिकॉज -20 है, -40 है, आपके पेरेंट्स नहीं है, डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, आपका खुद का खाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो आप मिस करते हो. और जो पहले 3 साल का से 1000 days निकाल जाता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दे विल स्टिक बैक टू कैनेडा. और जो नहीं कर पाता फिर वो रिवर्स इमिग्रेशन की तरफ जाता है. दे माइग्रेट बैक टू देयर कंट्री, वेदर इट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया. बट आई विल स्टिल से इफ यू डू सो, द ग्रास इज इट सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड. सो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जाकर भी बहुत सक्सेस मिल जाएगा. वंस यू आर हियर, यू टेक अ डिसीजन, यू स्टिक टू इट. इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट. वंस यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम. सो मुझे लगता है रिवर्स इमिग्रेशन मे बी 5-10% है, लेस देन दैट प्रॉब्ली. सो रिवर्स इमिग्रेशन अगर 5 to 10% है, ये मेरा ओपिनियन है, around like that, for example, almost like that's what I have seen, जहाँ पे हमारा immigration growth by last year like December is 0.02%, right? So isn't it concerning that we are actually, rather than gaining people, we are actually losing people out? I will not say, as I said probably initially also, कि ये एक फेज है, ये फेज निकल जाएगा. Okay. क्योंकि आपकी बहुत सारी इन्फ्लेशन है, हाउसिंग क्राइसिस है. So a lot of people probably are going back. You're not gaining enough people, and the policies are strict. आज की डेट में अगर कनाडा ये बोल दे फ्री वीजा, आई कैन गारंटी कनाडा प्रॉब्ली 1-1.5 साल में पूरा भर जाएगा. पंजाब से ही लोग भर देंगे, गुजरात से भर देंगे, ढाका से भर लेंगे. तो मैं मानता हूं ये बिकॉज स्ट्रिक्टर पॉलिसीज हैं, इसीलिए दे आर डूइंग अ कंट्रोल इमिग्रेशन, कि कंट्रोल एंड क्वालिटी, मेंटेनिंग द क्वालिटी. सो उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन इन्हें करनी पड़ेगी, बिकॉज आई सेड कंजम्पशन इज द engine to the economy. You need enough people to consume product and services. Henceforth, and they have their targets probably set every year. They will fine tune it, and you'll have more quality people coming in probably in the coming years. Okay. अभी आपको क्या लगता है कि कनाडा में एक्चुअली कौन सी प्रोफेशन पे दे आर मोर लाइक पुटिंग फोकस ऑन?
IRCC की बात कर रहे हो? IRCC में मुझे लग रहा है overall. स्किल बेस ही है. सी व्हाट इज यूएस लॉ शुड बी आवर गेन, बिकॉज H1B स्ट्रिक्ट हो गया है, EB2 स्ट्रिक्ट हो गया है, EB5 स्ट्रिक्ट हो गया है. जितने यूएस के प्रोग्राम्स हैं वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्पेशली H1B जो वर्क परमिट बेस्ड है. सो व्हाट इज देयर लॉ शुड बी आवर गेन. इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं जो यूएस से जाते हैं, दे शुड नॉट गो बैक टू बांग्लादेश और इंडिया, दे शुड बी रिटेन बाय कनाडा. सो मुझे लगता है स्किल बेस्ड जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए आईआरसीसी को. पीपल हु आर गुड एट इंग्लिश, हु आर प्रोफेशनल्स, दे कुड बी आईटी बैकग्राउंड, they could probably be a startup background, and they should be retained in the system rather than the non-quality candidates. So मुझे लगता है स्किल बेस्ड प्रोफेशनल्स को कनाडा को रिटेन करना चाहिए. अच्छा, सो वही है कि रेदर देन जस्ट गेटिंग पीपल इन, हैविंग देम एडुकेटेड. सो व्हाट आई हैव सीन प्रशांत भाई कि कनाडा में बहुत सारा प्रोग्राम ऐसे है जिसका एक्चुअली बाहर कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, like some of the programs, right? So should Canada concentrate on these kind of things? Hey, उसी हिसाब से लोग को लाओ, ओके, उसी चीज़ें पढ़ाओ जो निकल के जॉब ढूंढ सके, राइट? तो isn't it not a clear path by Immigration Canada also? I don't agree with that. Definitely, मुझे लगता है it can be streamlined more. There could be a lot of brainstorming as to how to overhaul the system. But IRCC is also, they do their due diligence, and it's a professional organization run by the government of Canada. तो मैं नहीं मानता कि उनको ये नहीं पता किसको लेके आना है. They know very well किसको लेके आना है. So they have done their due diligence. I think उसको थोड़ा fine tune करेंगे. So you probably will have better candidates with better quality. Okay. अभी जो रिसेंटली हम जो देख रहे हैं अभी लाइक सोसाइटी में, जैसे विल टॉक समथिंग अबाउट एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट, राइट? आपको क्या लग रहा है ये हेट्रेड कहाँ से आ रहा है? ये हेट्रेड अनफॉर्चुनेटली, Canadians have been here since 2011. They've been very welcoming. मैंने इस 15 साल में कोई रेशियल प्रोफाइलिंग, कोई रेसिस्ट कमेंट कुछ नहीं सुना आज तक. But a problem क्या है with due respect to our community anywhere from South Asia, if you are going to have too many people inside the system, and then you try and impose your custom and traditions, people who are native Canadians will repel. मतलब आप आ रहे हो कनाडा तो आप अपना कल्चर लेके आओ, बट उसको इतना पब्लिक डिस्प्ले मत करो. अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियन, वी आर वेरी इमोशनल पीपल. हम इमोशंस में बह के ये चीज़ पब्लिक करते हैं, एंड देन कनेडियंस फील कि ये क्या हो रहा है कि कोई स्ट्रीट पे अपना रीजनल डांस कर रहा है, कोई फायरवर्क्स कर रहा है. तो आई बिलीव आपका जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, डू नॉट इम्पोज ऑन द कम्युनिटी ऑन लार्ज. आप करो अपने घर में करो, बिना फायरवर्क्स के करो, बिना कलर्स के करो, जिससे कि जो कम्युनिटी ऑन द लार्ज है वो आपसे रिपेल नहीं करे. सो जो ये प्रोटेस्ट हुआ, आई थिंक समवेयर वी आर टू बी ब्लेम्ड. When we are coming to a new country, we have to accept. When in Rome, do as Romans is essentially what I believe. So आप जब यहाँ आ रहे हो, come with an open mind and fine tune or get absorbed in the community, not try and impose your own culture and own traditions. अगर आप ये करोगे तो कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैं मानता हूँ जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो बहुत कम लेवल पे हुए हैं. कनेडियंस अभी भी बाय एंड लार्ज वेलकमिंग है, बट ऐसा नहीं हो जाए अगर आज हमने ये चीज़ें नहीं ठीक की, मे बी अनदर 5 years दे विल बी फार मोर एग्रेसिव, प्रॉब्ली लाइक ऑस्ट्रेलियंस. सो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है. हमें भी अपनी तरफ कुछ देखना है, और कनेडियंस वेलकमिंग है, और ये छोटा मोटा प्रोटेस्ट तो कहीं पर भी हो जाता है, नो बिग डील. आई थिंक सो. ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो मैस एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट दैट इज हैपनिंग ओवर हियर. जो होता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी रेसिस्ट कंट्री गाइस. आई कैन बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ओके, एंड दे आर लाइक मैन इट्स रियली हार्ड टू सर्वाइव ओवर देयर, स्पेशली इफ यू आर एशियन, राइट? एंड वी डोंट वांट टू सी इट इन कैनेडा, राइट? Anti-immigration protest in Toronto
जो हुआ था वो बेसिकली उन लोगों का 3 मेन पॉइंट था. पॉइंट नंबर 1 ये था इज होम क्राइसिस. पॉइंट नंबर 2 था कि immigrants are lowering the overall wages and taking the job from Canadians, right? And point number 3 था multicultural crisis, right? So ये जो तीनों पॉइंट है ना, there's 3 points are really big. Okay. First of all, the first point I will also discuss with you. The first point is basically home crisis. I believe the home crisis is technically not on immigrants, is technically on government, right? Because the amount of people they invited, they should have a proper plan how they're gonna accommodate, how they're gonna find a house to live, right? Now what's happening right now, when they distributed the money for home, now the growth is only 0.2% by December 31st 2024. Now the builders are in a crisis that hey, the amount of money we have put for homes, that is not even getting like totally rented out, right? There is lots of vacancy over there. I have seen in Toronto, right? So many new projects are totally empty. They are not finding things. And we have seen a little bit that Regina पे भी अभी रेंट थोड़ा सा कम हो रहा है, right? Rather than last 2 to 3 years. सेकेंड जो थिंग था, आपको क्या लगता है कि एक्चुअली इमिग्रेंट्स आर टेकिंग कैनेडियंस जॉब? See, I believe that जो टेम्परी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है उसको ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया गया है. Let's say if you go to Tim Hortons, probably you went to Tim Hortons probably around 30 years back. If you are a white Canadian and if you order, the order was usually taken just the way it was delivered. आज क्या हो गया है कि आपने इतने सस्ते फॉरेन वर्कर्स लगा दिए हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो गई है कि when you probably a white Canadian drives through the driveway and he says I want a double, people can't get it right. बिकॉज जब आप मिनिमम वेज पे टेम्परी फॉरेन वर्कर को लेके आए और आपने फ्लड कर दिए पूरे टिम हॉर्टन्स को, दे कांट गेट अ सिंगल ऑर्डर राइट. सो दैट इज द फ्रस्ट्रेशन. एन एग्जाम्पल अ वाइट कैनेडियन इज फेसिंग कि व्हाट्स रॉन्ग विद आवर टिम हॉर्टन्स, एंड टिम हॉर्टन्स इज एसेंशियली वेरी क्लोज टू देयर हार्ट. ये तो एक बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ. तो इसको ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया गया. इस वजह से भी जो स्टूडेंट्स होते थे समर जॉब्स के लिए जाते थे वाइट कैनेडियंस, या जो कैनेडियंस थे भी प्रॉब्ली 40-50 ईयर्स से, उनको जॉब्स नहीं मिल रही. एंड बिजनेसेस आर डूइंग इट फॉर दैट चीप लेबर एंड सेव ऑन दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड मेक मोर प्रॉफिट्स. सो इट्स द होल इकोसिस्टम. आई थिंक इस पूरे इकोसिस्टम को सुधारना पड़ेगा इफ यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू बाय एंड लार्ज द कैनेडियन दैट दिस इज not any form of exploitation. We want to absorb the foreign workers, but in the right way. So temporary foreign worker का जो program है, मुझे लगता है उसको ठीक तरीके से apply नहीं किया गया है. That is the crux of the problem. So we just got people and just have them in the market without having a proper plan. Yes, that is what has been done. By and large, since the time this government probably came in 2015, 2015 to 2025 ही ज़्यादा damage हुआ है, और उसी के रिपरकशंस हैं जो लोग रिपेल कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द कनाडा दैट वी यूज्ड टू लिव इन. सो इसको ठीक अप्लाई करना जरूरी है, और इसको आप ठीक से अगर अप्लाई करोगे, आई एम श्योर हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. You won't have any form of exploitation. So technically the second point of also not blame the immigrants, right? Because it's technically The employers or the whole immigration process didn't and the policy making, right? Didn't implement in a proper way, right? So जो 3 points था guys, 2 point I think so is not on the immigrants, to be very honest, right? ऐसा नहीं कि मैं खुद immigrants हूँ, I'm just supporting it, right? When I got my Canadian citizenship, I have the oath of being a Canadian, right? So I want to also have my opinion on what we should do or not. जब इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुआ है, हमने देखा कि बहुत कैनेडियन जाके उन लोगों को समझाया कि भाई देखो, the amount of the points you are putting
most of them does not depend on the immigration. They got the visa, they came, and they came with a dream of being permanent over here because that's how the Canadian dream was established, right? Now इनमें उन लोगों का कोई फॉल्ट ही नहीं है, राइट? होम क्राइसिस इमिग्रेंट्स नहीं किया, ओके? अभी लोअर जो है भाई, मुझे आके जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे तो जॉब मिलेगा वही करूंगा ना मैं. दैट्स अ कॉमन सेंस, राइट? रेदर देन सिटिंग एट होम. अगर कहीं पे जॉब $15 का मिल रहा है जिसको हम सर्वाइविंग जॉब बोलते हैं, हम तो करेंगे, राइट? सो वो आई थिंक सो नॉट ऑन द इमिग्रेंट्स. But the third point, yes, we kind of agree. Okay, Canada always welcome multiculture. Okay, but we don't want that multiculture to be a crisis at this point, right? हम लोग we came from a really vivid culture. हमारा culture बहुत colorful है, right? But the Canadian culture is totally different, right? हम Canadian culture, they celebrate it in their home. They celebrated it in a smaller areas or protected areas, right? That nobody can get harmed. For example, अगर celebration मेरा नहीं है, I'm on the side of immigrants. अगर celebration मेरा नहीं है, I will not tolerate anyone having something in front of my house at 10 p.m. Right? Because I want to sleep, right? If it is my own country, everybody is celebrating. I'm with the flow. I'm also celebrating. That's a different scenario. So for the multicultural purpose, I would ask everyone that multicultural जो है हमारा culture, we should keep it inside ourselves. Okay, we should rear it inside ourselves, but we should not have a feelings like हम इसको wide में celebrate करेंगे and have someone suffer, right? So वही है. और आपको रीजना पे आप कितने साल से हो? 10 साल हो गए. 10 साल से हो गए. तो रीजना पे अभी जो आपके इमिग्रेशन का जो फ्लो है, व्हाट डू यू थिंक? फॉर एग्जांपल 10 years बैक इफ यू गो वर्सेस 2025, कितना इमिग्रेशन चेंजेस आया? आई थिंक बहुत चेंजेस आए. 10 साल पहले तो इट वाज वेरी इजी. देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोग्राम, स्पॉन्सरशिप थ्रू फैमिली एंड जॉब अप्रूवल लेटर या जॉब ऑफर के लिए इतना वेट नहीं करना पड़ता था. इतना ड्यू डिलिजेंस नहीं था एसआईएनपी के साथ. थिंग्स हैव बिकम डिफिकल्ट ईच ईयर दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग. सो चीज़ें अब डिफिकल्ट हो गई हैं. And maybe because of a lot of YouTube, TikTok, people know more about SINP. A lot of people have moved in. I think 4-5 साल में I was just reading some statistics. 22,000 लोग move हुए हैं Regina में. So things have, it's all about demand and supply. Anything works on demand and supply. Market dynamics यही हैं. So Regina is no different. Things have become difficult. But अभी भी जो लोग health pathway हो, tech pathway हो, एग्रीकल्चर बेस्ड हों प्रोग्राम्स, जिसका हो रहा है, जिसके पास जॉब अप्रूवल लेटर है, जॉब है, फॉरेन वर्कर्स आज भी उनको नॉमिनेशन मिल रही है. बट फूड, ट्रकिंग एंड रिटेल, ऑफ कोर्स देयर इज अ कैप एंड दैट्स नॉट वर्किंग. बट ऑन द होल, इफ आई सी द ट्रेंड in the last 4-5 years, things have definitely become tougher. Okay. So Prashant bhai, we are almost to the last of the show, because like we don't have it more longer without having some really good informations, right? What you wanna say for the people that is still having the Canadian dream, or for the people that is in work permit and struggling, right? And the PR applicants that is getting frustrated over the timeline, right? And what you want to say for all of them that is right now hustling and like struggling in immigration west? I think my message to all the temporary workers or temporary residents is going to be that just hang in there, be persistent with your efforts. Okay. Once you are persistent, there is a high probability that you will go against the odds and make it happen. And that's just not immigration. Any sphere of life, if you're persistent enough, if you're doing things with integrity, there is a high chance that you will just make it through. Immigration is no different. अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप just hang in there, keep hustling, and there is a chance that you will make it. For immigration related queries, you can always reach out to me. I'm usually available. And I cannot give you a generic statement, but on the whole, you have to be persistent enough
And I still have a feeling, and I believe in the Canadian dream, that coming to Canada is great. You know, I've been a resident for the last 15 years now, and I strongly endorse the Canadian dream. And if I have made a family here and a certain fortune, I'm sure you can do it too. For, as I said, you know, if you reach out to me for any immigration related queries, I'll be happy to help you. Awesome. मेरे एक क्वेश्चन था, जी। बहुत छोटा सा, वो जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम जब आए थे कनाडा में, जी दैट टाइम में है कि भाई कुछ भी कर लो, यू हैव टू गो फॉर स्टूडेंट, जी यू हैव टू गो एज ए स्टूडेंट, राइट? जी। पहले तो आप स्टूडेंट होके घुसो कनाडा में, जी। देन द एवरीथिंग विल फॉलो अलोंग. अभी सिचुएशन थोड़ा आई थिंक सो चेंज होगा बिकॉज द स्टूडेंट study permit rejection rate is higher, right? So if that rejection rate is higher, what's the best way to get into the country? So it depends again what stage of life you are in. If you're probably 18, 19, I still believe student is one of the best ways to get in. Let's say you've been a working professional, you're around 30, 35 with a substantial work ex, a good English, and probably a master's. Express entry could be great. Let's say if you are middle aged, probably around 40 to 45, you've got enough net worth, you can go in for a startup visa. Same thing if you are 40, 45, you have some business experience. Our C11 owner operator is very similar to the EB2 program of USA. So there are many ways you can immigrate to Canada. Still, there's no one best way. It depends on your profile and what you are suited to the most categories of immigration programs Canada has to offer. So it depends on your stage of life and your English, your education, your work ex. And then probably we can give you a host of services and host of programs that can be applicable to you. Okay. So प्रशांत भाई, आप बहुत एक्टिव हो सोशल मीडिया पे. जी. We have seen so many videos for Ahaan immigrations and everything. What do you think? How the social media is actually helping you to reach people? I think it's a great platform. Otherwise, आप कितने लोगों को reach out कर सकते हो? You know, in the olden times, you probably just have a mic and reach out to people, or probably run an advertisement on the television. But ये एक ऐसा medium है, whether it's YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn also, you reach out to so many people. So I think it's a great platform as long as it's used sensibly and wisely. So it's working for me. I'm sure it's working for others too. Okay, awesome. So আমাদের পিছন থেকে কিছু বলতেছে. I have a question. Tell us about the PGWT program. Is it working now? So what he's saying that हमारा जो PGWP है, okay, वो अभी कैसा कर रहा है? I think so. The question I'll clarify. आप जब स्टूडेंट आते हो तो नॉर्मली इफ यू स्टडी फॉर 2 years 3 years का वर्क परमिट आपका कॉन्फर्म होता है, राइट? और 1 साल करते हो तो नॉर्मली मेरे टाइम पे था कि 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, ऐसा कुछ. तो PGWP का बहुत रिजेक्शन आ रहा है, राइट? तो बेसिकली द क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द कैमरा, लिपू भाई, वो उसका क्वेश्चन है ये. आई बिलीव दैट्स द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क. आई फॉरगॉट अबाउट इट. सो PGW का भी क्या सिनेरियो है? So recently, you know, I was lucky enough to be on the official platform of University of Regina as an authorized agent for UFR, and I was undergoing a training with them. So उसमें उन्होंने programs discussion किए. जो crux निकल के आया वो ये है कि your program has to be substantial. कोई भी random program करने से आपको PGWP नहीं मिलेगा. आप it has to be a substantial program with a substantial amount of time invested into the program. अब वो दिन गए कि आपने 1 साल का सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा ले लिया और उसके बाद आपने PGWP डाल दिया. सारे प्रोग्राम्स एलिजिबल नहीं है. IRCC will see that your program is substantial. It is adding value to the skill set you have. So उसके बाद ही आपको PGWP अब मिल पाएगा. So when you are picking a program, do your due diligence. Just don't be blind enough to follow any agent and pick up any course like earlier. And as I said, you know, if you have any doubts, give me a call. I'll be happy to help you.
तो वो ये गाइस जो हो रहा है पहले वो है कि प्रोफेशनल एडवाइस इज रिकमेंडेड राइट नाउ बिकॉज वो दिन अभी गया कि कुछ भी कर लो कुछ भी हो जाएगा कोई ना कोई प्रोग्राम में घुस जाएंगे एंड देन पीआर हो जाएगा राइट या बाद में भी आप डीएलआई चेंज कर लेते थे पहले, अब नहीं होता. इफ यू चेंज द डीएलआई देयर इज नो गारंटी यू विल गेट द स्टडी परमिट एक्सटेंशन. सो थिंग्स हैव बिकम डिफिकल्ट नाउ. हाँ वही क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं तो आने के बाद एक हफ्ते में बाद ही डीएलए चेंज कर लिया वो अब नहीं होता. ओके और मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा कि दे डिड समथिंग 1 ईयर कोर्स देन उसको किसी ने बोला कि भाई 1 साल की कोर्स में 1 ही साल का वर्क परमिट मिलता है तो देन दे डू अनदर कोर्स व्हिच इज टोटली डिफरेंट एंड दे कॉल दिस इज अ ब्रिज कोर्स राइट मेरे टाइम पे ये बहुत चल रहा था कि भाई कुछ भी मिला जुला के 2 साल कर लो तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड राइट any path you are choosing make sure you are taking professional advice especially until the things are not getting better राइट. हम नॉर्मली रिजना अनकट्स में गेस्ट को ही क्वेश्चन करते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस My question is related to the podcast, you know, that आप भी बहुत टाइम से podcast कर रहे हो. What is one part of the podcast you really find very challenging when you're doing podcasts with so many guests? You probably come across many guests on your platform. तो आपको सबसे challenging part क्या लगता है podcast का? कैमरा शाइनेस सो जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि लोगों के पास बहुत अच्छा कंटेंट होता है राइट एंड वो लोग बात करना चाहता है जस्ट ओनली थिंग इज दे आर नर्वस अबाउट दिस लाइट्स कैमरा बिहाइंड द सीनरी दिस माइक्रोफोन ओके हम बहुत सोशल सिक्योरिटी में वी फील लाइक वी आर इन डेंजर ऑफ सोशल सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग कि जाके क्या बोल देंगे क्या हो जाएगा और नहीं तो लोग क्या सोचेंगे राइट क्योंकि हमारा जो सीजन 1 था दैट वाज फुल्ली बोल्ड बांग्ला में था आपने नहीं समझा होगा बट वो फुल्ली बोल्ड कॉन्वर्सेशन था राइट. तो वो था लोगों को ये था कि मैं बोल्ड कॉन्वर्सेशन ना रूम के अंदर कर सकता हूँ लेकिन मैं पॉडकास्ट में नहीं कर सकता क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट a mass people of reach that wanna know me like in a way that So are you trying to say that the guests that come on your podcast, they are different off camera and they are different in front of the camera? no the one we are getting they are pretty natural in both side क्योंकि नॉर्मल मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है पाशन तो वी आर वेरी सिलेक्टिव ओके जब क्योंकि हम अगर सिलेक्टिव नहीं जाते तो हम महीने पे अराउंड 4-5 पॉडकास्ट कर ही लेते हैं ओके महीने पे हम 1-2 पॉडकास्ट ही जाते हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं कि जो टॉपिक्स आए ना दैट टॉपिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड अदर साइड जो बंदा बैठा है वो थोड़ा जॉली माइंडेड हो राइट. ओके और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इन रीजना कम्युनिटी इज बेसिकली लाइक पीपल हैव गुड स्टोरीज दे हैव गुड कंटेंट दे वांट टू टॉक अबाउट इट ऑफ कैमरा बट नॉट ऑन कैमरा सो राइट. So that applies to a guest also? गेस्ट ऑल्सो हम तो भाई ओपन है हम तो कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि हम तो सबको बोलते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है भाई किसी को गाली देना है आ जाओ ओके कोई चीज जो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको स्पेस नहीं दे रहा है बोलने के लिए आ जाओ ओके आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलना है जो आपको दूसरा कोई पॉडकास्ट नहीं दे रहा है आ जाओ विल गिव यू द प्लेटफॉर्म विल गिव यू द रीच एवरीथिंग विल बी देयर बस आ जाओ राइट. आई थिंक फेयर इनफ. आई गॉट योर पॉइंट. It's a great platform to express what you feel and probably to share knowledge, and it was lovely being on this podcast. I look forward to some more. Sure. Thank you so much, Prashant bhai, for coming. Thanks for inviting me over. Thank you so much.